Hello everyone, my name is Vivek. Uh, I'm your math teacher. Okay. Uh, wait, 1 minute. Okay. Hello everyone, my name is Vivek Kumar. I'm a math teacher. Okay, and if I tell about my background, I am a computer science engineer. I have a 2+ year teaching experience. Okay. Today we will study geometry. Okay. So wait for some while. After that we will start. Okay. We will start, okay, after 8 15 8:16. After that we will start. Okay. After 8 after 2 minutes I will going to teach you geometry. It's a revision classes. I think you have already studied about geometry. Okay. Good evening RN Nandini. How are you, RN Nandini? How are you, Nandini? Tell me. Fine, beta. Good evening. Ready for today classes? Or tell me, Nandini. Yeah, beta, this is revision classes. Have you studied before, Nandini? About geometry? Okay. So you will enjoy today if you know about geometry. Then I will ask question. Okay. So after that, asking question, you have to give an answer. Okay. Good evening, Harpreet.
Good evening, Shreya. How are you, Shreya? Wait. Harnoor, okay, beta, okay. Good evening, Harnoor. Okay, beta, okay. Shruti. It's your here na Son. It's Son Shreya Yadav. So that's why I thought ki it's your Shreya is your name. Okay, beta. Now I understand your name is Shruti Harnoor. Okay, because before na Nandini told me ki my name is Ara Nandini. So you all have to say na that ki my name is Sir this. Okay, beta. Okay. Wait. Chalo. We are gonna to study geometry. I'm audible properly. Everyone can hear. Tell me first. I'm audible clearly. I am audible clearly, beta. Okay. So today we are gonna to today we are going to study geometry. Okay. Basically, what is geometry? Anything around us, na? Like anything. We can see we can see a box. We can see a phone. Okay. It is in any shape, na? Beta, it is any shape. Okay. What is a shape? It is a form of a rectangle shape. Okay. And here you can see here you can see it is a box. Okay. What is the shape of the box? It is a shape of cuboid, like a cuboid shape, na? So I'm gonna to say I'm saying that ki anything around us, yeah. If you are sitting on the bed, na, you can see a shape of bed, na. It is also any shape of bed. Okay, it is also a form of a geometry. Any shape, any shape, beta. Any shape, एनी शेप अराउंड अस ना, वो एक फॉर्म के ज्योमेट्री फॉर्म में होता है. ज्योमेट्री में क्या होता है? डायरेक्शन हो जाता है, एंगल होता है. इट इज इन ज्योमेट्री ना, देयर इज एंगल, डायरेक्शन, शेप. इट इज ऑल अ टाइप ऑफ, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्री. ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट ना, व्हाई डू वी स्टडी ज्योमेट्री बेटा? व्हाई डू वी स्टडी ज्योमेट्री? बिकॉज बेटा, to recognize shape, we don't know na. uh, if you haven't studied geometry, you don't know na what is the shape of this box, what is the shape of this phone, what is the shape of this boxes. You don't know na. So if you have to know na, so first what you have to do, you have to study geometry. Okay.
after studying geometry na, you are able to determine that what is the shape of this, what is the shape of this. Okay, so that's why you have to study geometry first. In this geometry you have to recognize shapes. You will able to understand after studying geometry. And second, you can create a picture if you know the shape of uh, rectangle, if you know the shape of circle. What happened, Nandini? Beta, are you getting beta what I'm teaching? Nandini? ओके ओके बेटा. सो हाँ, तो हमें ज्योमेट्री पढ़ने के लिए ना फर्स्ट ना वी हैव टू नो ज्योमेट्री. अगर आप पढ़ते हो ना आफ्टर स्टडिंग ज्योमेट्री ना, यू आर एबल टू ड्रॉ अ पिक्चर ना, एनी पिक्चर लाइक सर्कल. You are able to draw a square picture. You are able to draw rectangle picture na. So after knowing that na कि this is a rectangle shape, this is a square shape, this is a circle shape. Okay. और क्यों पढ़ते हो? ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. ऑब्जेक्ट लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट ना, दिस इज ऑब्जेक्ट ना, दिस फोन इज ऑब्जेक्ट ना. सो आप ज्योमेट्री पढ़े होगे ना, तो आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो. यू कैन डिटरमाइन ना दैट इट इज अ शेप ऑफ क्यूबाइड. ओके, ठीक है. लाइक दिस इज अ कॉपी ना, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन डिटरमाइन ना द शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस. So that's why we study geometry first to improve thinking. Now, what we are gonna to study in this chapter, we will gonna to study points and line. We are studying line, segment, and ray, curve and straight line, plane shapes, solid shapes, edges and faces, patterns, symmetry. We are gonna to study all of this because it's a revision classes. Na? So I am going very fast in this chapter. Now, what is a point? It is the main thing. Na? What is a point? What? Tell me. What is it? This red dot. What is this? It is a point, beta. Like you can see, this is a it is a line book, beta. Okay, it is a line. So I put a dot here. So what is this? Wait, beta. This is a line, beta. Okay, and now I put a dot here. So this dot is a point, beta. This is a point, this is a point, this is a point, this is a point, this is a point. Okay. If I connect both the point, na, if I am connecting both point, I'm connecting this point or this point, na. So what it will become? It will become line. Okay. This point, I'm connecting. Huh. So it become a line. Okay. So up, beta, it's called point. So here you can see in visual representation one line which is gonna a straight line. It's a straight line. Here is a point A. The point is nothing. A point show an exact position or location. Exact position. I am asking about this position. So it is exact position. It is exact position location. Or in properties of point, no length. There is no length. There is no width. There is no thickness. Only show position. It's show position. Okay. It's show position. It's show location. Okay. Only location, position. And how we representation of a point? This is the representation of point. Dot only. Dot is the representation of a point. Okay. Here you can able to see
in this PPT show by a dot. Okay, real life example. Real life example. Here you can see an example. एक मिनट. Here you can able to see this pencil tip. Tip you can able tip na. Wait a bit. How can I have no here? You are able to see. Beta, you are able to see. You are able to see. This is a tip. So this what is this? This is a point, beta. This is a dot, na. The front side of a pen. Front side of pen. You are able to see, beta. Tell me in the chat. You are able to see. Huh. So the tip of pen, na, it's represent as a point. Okay, beta. A dot on a paper, like it is a paper and a dot. So it is a real life example, beta. A star in the sky, a star is a type of a point. Okay, so it is a basically a point. Now we are gonna to understand what is a line. Are you able to understand, everyone? Tell me in the chat. Are you able to understand? Are you able to understand? Tell me in the chat. What happens, Sarah? Tell me. Okay, okay, Nandini. What happens, Sarah? Tell me. What are you not understanding? Tell me in the chat. So we are gonna to uh, what is a line? Basically, beta, a line is a made of joining a many point in a straight line. This. So it is a connected line. It is a point. So here is a line, na beta. Here is a line. We are connecting, na. So it form a line. Now I am saying line become ना पॉइंट्स. लाइन कैसे बनता है? ये पॉइंट से कनेक्टेड पॉइंट से बनता है. इट इज अ इट मेक ना it is a made of points. Okay, it is a made of points. So there is a lots of points in a one line, and it is a connected to all, like it is a connected this na beta. ओके ओके सीरिया, नो इशू बेटा, अंडरस्टैंड. आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो. सो ये लाइन है ना बेटा. तो लाइन कैसे बनता है? इन अ वन लाइन ना देयर इज अ लॉट्स ऑफ पॉइंट बेटा. देयर इज अ लॉट्स ऑफ पॉइंट. देयर इज अ मेनी पॉइंट्स in a one line. It is a made of points only. So a line is made by joining many points in a straight path. I told you na. So in a line has a length. Line has a length. There is a no thickness. There is no end points. Infinity long. So in a line na beta, there is infinity. In line there is no end point. If you can see here, they it is increasing. It is going. Okay, there is no end point from that point also. And if I start from here now, it will never stop, because it is infinity long. Line is infinity long. There is no end point. In a property you can remember na, because in remember there's a length, there is no thickness, it is infinity long, it has no end point. Okay, you can write in your copy also.
basically about lines. Now we are gonna to study line segment. We are gonna study line segment. Basically, line has no endpoint, but line segment has endpoint beta. Okay, it is a differentiate between line or line segment. Okay, what? In line there is no endpoint, but in line segment there is a endpoint, two endpoint. Okay, in line segment there is two endpoint, and it has fixed length. It has fixed length. It can be measured. Line segment can be measured, but line cannot be measured. Okay, line cannot be measured, but line segment can be measured. Line segment can be measured. Okay, it is distinct between line and line segment. Okay, you can see here, if you start from that point na, and you are starting from A and you are ending that at that point, so this is the end point. This is the end point. Okay, you can measure. It can be 5 centimeter. It can be 4 centimeter. It can be 3 centimeter. Anything. It can be anything. But if it is line na, you cannot be measured. Okay. Real life example, ages of book. Like you can see na, ages of book here. This age. This is age na. This is ages of book beta. You can अंडरस्टैंड. सो दो एजेज होता है ना, इन दोनों के बीच में लाइन सेगमेंट होता है. ए बुक एजेज रिप्रेजेंट ना, ए बुक एजेज रिप्रेजेंट ए लाइन सेगमेंट विद टू एंड पॉइंट. साइड ऑफ रोलर, जो रूलर होता है ना बेटा, रूलर स्केल ये ना, कॉमन लैंग्वेज स्केल बेटा, देयर इज ना एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट. मैच स्टिक, देयर इज अ एंड पॉइंट. ओके, वेट बेटा, वेट. Wait. So it is a line segment. Okay. Now we are going to study about range. What is a range? Basically, the range is that it starts from one point, beta. It has no end point, no two end point. Okay. Like in line segment, there are the two end point. Na? So in a ray, beta, wait. So in a ray, na, in a ray has a two end point. No, an array has no two end point, beta. As a line segment has two end point. Okay. In array, na, it is a start from one point, goes on forever in one direction. Goes on forever in one direction. Okay. Key part na beta, end point, the starting point, and direction where it extend. Line, you can sun ray, you can see a sun na? It is a sun beta, ठीक है. You can able to see in around us na, in a morning's time na, you can able to see the ray coming from the sun na.
It is coming from sun na. It is coming from one point na, one destination, one point to the destination at your home. Okay, so it is a form of ray. It is a form of ray, beta. It is coming from the one sources. It is coming from one sources which sun. So it is a form of ray. वन वे इन्फिनाइट पाथ, एक वे होता है बट इन्फिनाइट पाथ होता है, मतलब बहुत तरह से पार्ट होता है. लाइक यू कैन एबल टू नो, यू हैव अ टॉर्च ना इन योर होम. तो व्हेन यू लाइट ऑन ना, लाइट ऑन द टॉर्चेस ना, द राइट लाइट कमिंग फ्रॉम द टॉर्चेस ना, it is scattered in a ray, in a form of ray. Okay. Okay. Torch light, laser pointer, laser, you know not laser beta. It is also a one type of a torches beta, a small torches, but their beam light is very strong, stronger than torch. Okay. Here you can study about rays. Now, now we are gonna to study about straight line or curve line. What is a straight line and what is a curve line? What is a straight line? Wait, wait. I'm audible. Tell me, everyone. I'm audible, everyone. Okay. So today we are study. Now we are gonna to study straight line or curve line. Okay, okay, beta. Okay, sir. Okay, 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 Harnur. Okay. स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन हैज नो बेंड. वो कहीं झुका नहीं होता बेटा. वन लाइन लाइक you are able to see na, you are able to see a copy na, you are able to see it is a straight line na beta. It is a straight line na. It is it has no bend na, it has no bend na, like it has no bend na, like this. It is bend na, it is bend, but now you can able to see it is a straight line. So in a straight line na, there is no bend, there is no bend, like that, like that, like that, like that. Okay. But in curve line na, curve line has bend. Curve line is not a straight line. Like in real life example, a straight line, scale, edges, table edges, blackboard edges. It is in the form of a straight line. And curve line na, rainbow, necklace, बेटा necklace होता है ना, वो भी curve के form में होता है ना. It is a form of curve ना. Moon, बेटा moon, चंद्रमा, moon. It is also na curved. It is a round shape na. So round shape also come in a curve line na. Okay. Zigzag way, you can also say zigzag way. Okay. Now we are gonna study about plane shape, bro. Beta plane shape. In plane shape 2D. 2D 2D में क्या क्या आता है बेटा? सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, और क्या आता है? स्क्वायर आता है. ओके. सो प्लेन शेप क्या होता है? व्हाट इज अ प्लेन शेप?
प्लेन शेप और अ फ्लैट शेप दैट लाई ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो कि एक फ्लैट सरफेस में ना, इन अ कॉमन लैंग्वेज बेटा, जो 2D इमेज होता है ना, वो आप है ना वो पेजेस पे ना आप उसको राइट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जो स्ट्रक्चर है ना, जो शेप है ना, आप उस शेप को आप बना सकते हो इन अ प्लेन, इन आप कॉपी में या कहीं पे भी ना ब्लैक बोर्ड पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो प्लेन शेप को। बट इन 3D शेप ना बेटा, आप यू कैन नॉट ड्रॉ। आप 3D शेप को ना इन अ जनरल लैंग्वेज, आई एम सेइंग इन अ जनरल लैंग्वेज ना बेटा, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ में ना आप 3D इमेज को ना आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, बट 2D को आप ड्रॉ कर सकते हो। 3D को आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, मतलब पकड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो आप, बट ड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। आपको उसमें परेशानी आएगी ड्रॉ करने में, ठीक है। देखो 2D शेप क्या होता है, एक फ्लैट होता है, उसमें थिकनेस नहीं होता है, फ्लैट होता है। 2D शेप जैसे फ्लैट होता है, there is no thickness in 2D shape, but in 3D shape beta, it is in a form of solid. 3D shape, it is a form of solid, but it has a thickness also. थिकनेस तो होता है ना बेटा, तभी तो आप उसको आप होल्ड कर रहे हो अपने हाथों में किसी भी चीज को। जैसे आप स्पेयर बॉल होता है, आप क्रिकेट तो खेलते होंगे ना, क्रिकेट खेलते हो? टेल मी इन द चैट, आप क्रिकेट खेलते हो? हाउ मेनी प्ले क्रिकेट? नहीं खेलते हो बेटा? बॉल तो जानते हो ना, बॉल नहीं खेलते हो तो बेटा आप बैडमिंटन खेलते हो? बैडमिंटन तो खेलते हो ना श्रेय आप? बैडमिंटन तो खेलते हो ना बेटा? सॉरी नंदिनी, बेटा आप बैडमिंटन तो खेलते हो ना? यस। जो कॉर्क होता है बेटा, जो कॉर्क होता है, व्हाट इज इट इन, उसका शेप क्या होता है बेटा? ऊपर क्या होता है, नीचे जो होता है वो क्या, इट इज इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, और इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कोन बेटा। सो ये क्या हो गया, 3D शेप हो गया ना वो तो 3D शेप हुआ। जो क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल बॉल होता है ना, वो भी स्पेयर के फॉर्म में है, तो वो भी तो 3D शेप हुआ। उसको आप होल्ड कर रहे हो, उसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते हो ना आप प्लेन शेप, प्लेन, आप प्लेन या ब्लैक बोर्ड पे या अपने कॉपी में आप यू कैन नॉट एबल टू ड्रॉ ना। हाँ हरनून बेटा, क्रिकेट खेलते हो तो उसमें बॉल होता है ना, तो वो एक 3D शेप के 3D शेप हुआ, वो स्फीयर के फॉर्म में आता है। बॉल को ना आप 3D शेप में स्फीयर कहते हो, ठीक है। उसका थिकनेस होता है, देयर आर थिकनेस ना बॉल में, बट इन 2D शेप देयर इज नो थिकनेस। चलो, प्लेन शेप आर द फ्लैट शेप दैट लाई ऑन द फ्लैट सरफेस। वही मैंने अभी जो कहा है ना, आप फ्लैट सरफेस पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। 2D शेप में क्या होता है, लेंथ होता है। 2D शेप में विथ होता है, बट 2D शेप में हाइट नहीं होता। देयर इज नो हाइट ऑन 2D शेप, ओके। लाइक इट इज अ लेंथ, इट इज अ ब्रेथ। इट इज अ लेंथ और इट इज अ हाइट, सॉरी इट इज अ ब्रेथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2D डायमेंशनल है, 2D डायमेंशनल है, फ्लैट सरफेस है, और इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, ओके। इसको स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सब मेजर होता है यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। अब 2D शेप में क्या होता है, एक स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड्स है ना, ये साइड्स, स्क्वायर में क्या होता है कि जो चारों साइड होता है ना, फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल इन वेयर, इन
in a square. Like you can able to see this side, this side, this side, this side. ये चारों साइड ना, फोर साइड आर इक्वल, ओके बेटा। और इसमें आप क्या पढ़ोगे ना बेटा, 2D शेप में एरिया और पेरीमीटर पढ़ोगे बेटा, ठीक है। आर यू अवेयर टू नो, आर यू नो अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर? आर यू नो अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर्स? नो, ओके बेटा। देखो, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है, जो आप मेजर करते हो ना, अगर आपको कोई शेप का ना, आपको कोई शेप में, जैसे आप अपने घर में है, जैसे आपका घर है बेटा, ठीक है। लाइक आप आपके पास घर है, जिस घर के रूम में आप पढ़ रहे हो ना अभी, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो ना, उस रूम में के जो फ्लोर है ना बेटा, फ्लोर, उस फ्लोर पे आपको कारपेट बिछाना है। आपको कारपेट, सारे फ्लोर पे कारपेट आपको बिछवाना है। तो हाउ डू यू नो दैट कि ये फ्लोर का जो साई लेंथ ब्रेथ है ना, कैसे आप फाइंड करोगे? सो आप एरिया के हेल्प से आप उसको जानोगे कि मुझे कारपेट इतने एरिया में आपको कारपेट को आपको बिछवाना है। तो हाउ विल नो? सो आप ये, जैसे ये आपका रूम है बेटा, ठीक है, ये रूम है। तो आपको ये जो एरिया फाइंड करना है ना, ये जो स्पेस को आपको फाइंड करना है ना, इस स्पेस को मेजर करना है ना, तो इसी को एरिया कहते हैं बेटा। एरिया किसको कहते हैं? इनसाइड द एनी शेप, इनसाइड एनी शेप, ओके। शेप इन स्पेस इनसाइड a स्पेस बुक बेटा। एंड हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर? सो इसका फॉर्मूला है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा? इसका स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा साइड स्क्वायर, ओके। टेल मी इन अ चैट, आर यू गेटिंग? टेल मी इन चैट। साइड स्क्वायर, क्योंकि वाई साइड स्क्वायर बेटा, बिकॉज ये साइड और ये साइड इक्वल है। दिस साइड और बेटा दिस साइड्स आर इक्वल। इक्वल तो चारों साइड है बेटा, इक्वल तो चारों साइड है यार। तो अब फॉर्मूला इसका जान लो। फॉर्मूला एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और जो पेरीमीटर बेटा क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेटा जो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस अराउंड अ 2D शेप, डिस्टेंस अराउंड अ 2D शेप। जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो ए है ना, ए चलता है, बी के पास जाता है, बी से सी के पास जाता है, सी से डी के पास जाता है, फिर डी से ए के पास आता है ना, जो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री रीजन बेटा, इसको आप मेजर करते हैं ना, उसी को पेरीमीटर कहते हैं, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा? चारों साइड इक्वल है, तो 4 इंटू क्या करोगे आप? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड बेटा, 4 इंटू साइड, ठीक है। इसका सारा ऑल साइडर सेम होता है, इक्वल कॉर्नर। और ये जो बेटा, ये कितना फॉर्म करता जानते हो? 90 डिग्री फॉर्म करता है एंगल बेटा। इट फॉर्म ना 90 डिग्री एंगल, बिकॉज ऑल साइडर इक्वल ना, सो इट फॉर्म 90 डिग्री। और रेक्टेंगल में भी बेटा 90 डिग्री फॉर्म करता है। सो इन रेक्टेंगल दिस साइड और दिस साइड्स आर
इसमें क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस दिस साइड, दिस दिस बोथ आर अपोजिट ना, एंड ये दिस this side or these sides are equal because opposite na, both are opposite, both are opposite, so both are equal, both are opposite, both are equal in rectangle. And what is the area of rectangle? एरिया क्या होता है, ये इनसाइड स्पेस, इनसाइड द स्पेस को आप मेजर करते हो ना, उसी को एरिया कहते हैं। इनसाइड जो स्पेस होता है ना, कोई भी 2D शेप का, 2D या 3D शेप के, उसी को हम लोग एरिया कहते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होगा बेटा इसमें लेंथ इन मल्टीप्लाई ब्रेथ, या विड्थ कर दो बेटा, ब्रेथ और विड्थ बोथ आर सेम। एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, लाइक दैट, यहाँ से आप गए, फिर यहाँ पास गए, आप फिर यहाँ पे आए, फिर फ्रॉम हियर टू देयर, फिर फ्रॉम देयर टू एट द एंड पॉइंट। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल लेंथ प्लस विथ, दिस इज द पेरीमीटर बेटा, दिस इज द पेरीमीटर, ओके, दिस इज द पेरीमीटर। और इसका इट ऑल्सो फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल बेटा, it also form the 90 degree angle. How it form a 90 degree angle? Because one straight line on second straight line na, both are making 90 degree angle, like that na, they are forming 90 degree angle, okay. All corners are right angle, has 4 side, opposite sides are equal, okay. Real life example beta, book, doors, TV screen. Now we are gonna to study triangles. What is a triangles? A triangle has 3 sides, triangle has 3 sides, and triangle has 3 corner, one corner, second corner, third corner, okay. Basically it is a it is a 3 sides better, okay. They have a 3 sides, one side, second side, third side, okay. And there is a 3 corner, this corner, this corner, corner, corner क्या होता है बेटा, दो लाइन जहां मिलता है ना, दो लाइन, टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, इट फॉर्म अ कॉर्नर, इट इज अ कॉर्नर, corner vertices both are same, like traffic signals, roofs, bridges, price slice, that all the slices beta, it also make the triangle shape na, roof beta, roof also make a triangle shape. Now we are gonna to study circle. सर्कल क्या होता है बेटा, इट इज अ राउंड शेप बेटा, इट इज अ राउंड शेप, देयर इज नो साइड, देयर इज नो कॉर्नर, कॉर्नर किस में था, ट्रायंगल में कॉर्नर था, रेक्टेंगल में कॉर्नर था, स्क्वायर हैज ए कॉर्नर, बट इन अ सर्कल देयर इज नो कॉर्नर, ओके. इट इज ओनली परफेक्टली राउंड बेटा, इट हैज नो साइड्स, and it is a circle visualization you are able to see here. It is a, what is it, is a center, and what is it is a radius beta, it is a radius, and if half, ये भी रेडियस है बेटा, यहाँ से 2r इज नोन, 2r ना, 2r को हम लोग 1 डायमीटर कहते हैं बेटा, ओके, डायमीटर। रियल लाइफ एग्जांपल बेटा, क्वाइन होता है ना, वो भी राउंड सर्कल के शेप में होता है, क्लॉक वो भी सर्कल के शेप में होता है, व्हील, व्हील गाड़ी जो व्हील होता है ना, वो भी सर्कल के फॉर्म में होता है बेटा। नाउ वी आर गोना, नाउ वी आर, यहाँ पे हम लोग सॉलिड शेप पढ़ेंगे। नाउ वी विल टीच अबाउट, आई विल टीच अबाउट सॉलिड शेप, 3D शेप बेटा। व्हाट आर सॉलिड शेप्स?
solid shapes na solid shapes are the three dimensional figure that occupy spaces. Okay, solid shapes are the three dimensional figure that occupy spaces, like like you can able to see here the cube, here is a cuboid. I think there's a it, there is no cylinder picture yet here, but you can see here. This is a picture of cylinder. Okay, एंड हेयर यू आर एबल टू सी स्पेयर. आप लोग इसमें पढ़ोगे ये सब जो थ्री डी शेप्स है ना, आप इसमें पढ़ोगे. ठीक है बेटा, थ्री शेप्स में. What are solid shapes? Solid shapes are the three-dimensional figure that occupy spaces. It is not flat. They have a thickness, beta. Solid shapes have a thickness. It has three dimensionals: length, breadth, height. But in a 2D shape, there is only length and breadth. There is no height in 2D shape. But in 3D shape, beta, in 3D shape, they have a length and breadth. Where do we shape our solid shapes? Book, boxes, can, ice cream, cones. Okay, it's all the 3D shapes. बुक्स भी थ्री डी शेप्स में होता है, कैन भी थ्री डी शेप्स में होता है, बॉक्सेस भी थ्री डी शेप्स में होता है. आइसक्रीम का जो कोन्स होता है ना, आप कोन वाले आइसक्रीम खाते हैं, वो भी थ्री डी शेप्स में होते हैं. ओके, क्यूबाइड बेटा, क्यूबाइड क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस शेप्स. मतलब जो रेक्टेंगल होता है ना बेटा, रेक्टेंगल होता है ना, वो एक साथ आके एसोसिएट होता है ना, तो वो क्यूबाइड के फॉर्म करते हैं. लाइक दैट यू कैन एबल टू सी दिस रेक्टेंगल. अप भी जाता है, ऐसे भी जाता है, इधर इधर. तो 6 रेक्टेंगल फेसेस मेक अ वन क्यूबाइड. हियर यू आर एबल टू सी दिस शेप है ना, दे आर फॉर्मिंग क्यूबाइड. Properties of cuboids: 6 rectangle faces, 12 edges, 8 corners. Corners beta, these corners, it's make 8 corners. Okay beta, and 12 edges beta. Cylinder क्या होता है? वो राउंड होता है with a flat ends. It is a rounded and it is a flat ends. टू फ्लैट सर्कुलर फेसेस होता है. सिलेंडर के ऊपर क्या होता है? सर्कुलर होता है, और नीचे भी क्या होता है? सर्कुलर होता है बेटा. एंड वन अ कर्व सरफेस होता है. जो कर्व सरफेस होता है ना, इन बिटवीन अ सिलेंडर यू कैन एबल टू सी ना, इट इज फॉर्म ऑफ कर्व सरफेस, राउंड टॉप बॉटम. टिन कैन एंड ड्रम आर द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर बेटा. कोन यू नाउ कोन आप आइसक्रीम खाते हो ना, जो कोन होता है ना, वो इट इज अ फॉर्म ऑफ कोन बेटा. वन फ्लैट सर्कुलर फेसेज होता है बेटा, और इट इज अ फॉर्म ऑफ कोन. जो कोन होता है ना, इट इज मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट सर्कुलर फेसेज बेटा, एंड सेकेंड वन इज अ कोन. वन कर्व सरफेसेज, one corner, one curved faces, one flat circular faces. Okay, in cone. In a birthday party, you can see a birthday cap, na beta. It is also a form of a shape, also a shape of cone. Now you are able to see a sphere, beta. Sphere क्या होता है? एक बॉल, जो बॉल आप प्ले करते हो ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज ऑल्सो अ 3D शेप बेटा. आप इसको क्या कहते हैं? ड्रॉ नहीं कर सकते हो ना आप. कोई भी प्लेन सरफेस पे यू कैन नॉट एबल टू ड्रॉ ना, यू कैन ओनली होल्ड इट. बॉल, ग्लोब, ग्लोब भी देखते हो गए आप ऑफिस में ना, ग्लोब रहता है, वो भी क्या होता है? वो भी स्फीयर के फॉर्म में होता है.
only curved surfaces beta, no edges. Sphere has no edges, sphere has no corner, sphere has only curved surfaces. Okay, now you are able to see here. क्यूब 6 स्क्वायर फेसेज होता है बेटा, 12 एजेज होता है, 8 कॉर्नर होता है. क्यूबाइड 6 रेक्टेंगल फेसेज होता है, 12 एजेज होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं. कोन में कितने फेसेज होते हैं? 1 फ्लैट फेस होता है, 1 कर्व फेस होता है और 1 कॉर्नर होता है. सिलेंडर में क्या होता है? 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेज होता है, 1 कर्व फेस होता है, 0 कॉर्नर्स होता है. स्फेयर में कितने कर्व? ओनली कर्व सरफेसेज, नो एजेस, नो कॉर्नर्स. खत्म हो गया बेटा. शेप आपको पैटर्न शेप यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, ठीक है. लाइक आपको यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स का क्वेश्चन है बेटा, कि यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट में कौन से शेप में आएगा. लाइक यहाँ सर्कल है, ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, तो हियर विल कम सर्कल. नाउ यू आर एबल टू सी स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल. नाउ व्हाट विल कम हियर? स्क्वायर. इट इज अ पैटर्न बेटा. पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि नेक्स्ट में क्या आएगा. तो आपको नेक्स्ट में कौन सी शेप आएगा वो फर्स्ट आपको कैसे डिटरमाइन करोगे? पहले फर्स्ट आप क्या करोगे? पहले यहाँ से चेक करोगे, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, फिर ट्रायंगल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ट्रायंगल. सो आपको पैटर्न में चेक करना पड़ेगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर इसके नेक्स्ट क्या आएगा. सो आपको डिटरमाइन करना होगा फर्स्ट. सिमेट्री क्या होता है बेटा? कोई भी शेप ना 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड होता है ना, उसी को सिमेट्री कहते हैं. जैसे बटरफ्लाई होता है ना, बटरफ्लाई के विंग्स होता है ना, बोथ विंग्स ना, इट इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्री बेटा. बट इट इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्री. Wings are symmetrical. There's a leaf. Leaf also example of symmetrical. Heart shapes. It is also example of symmetry because both shapes are vertical line. Na? If you divide it between na. This is a beta 2D 3D. Now it's completed. So यहाँ पे क्या होता है? फ्लैट शेप में क्या होता है? डिफरेंशिएट है बेटा. फ्लैट शेप में क्या होता है? कोई थिकनेस नहीं होता. देयर इज नो थिकनेस, देयर इज अ थिकनेस. It is measured in length width, and it is measured in length width and height. And is what is the example of 2D? Square, rectangle, triangle, circle. And what is the example? Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere. Sphere जो 2D स्फीयर क्या होता है? रोल क्या होता है? यू हैव टू सी रोल और स्लाइड. क्यूब और क्यूबाइड स्लाइड यू कैन एबल टू. ये इट इज नॉट ना, दिस शेप विल नॉट रोल ना, cube will not roll na. Cube, what will cube do? Cube can be slide, but cube cannot be roll. Sphere can be roll ना. Will roll करता ना बेटा, will roll करता ना. Square या cylinder form shape ना, it can able to roll, but it cannot be slide. Completed बेटा. Understand everyone? Tell me in the chat बेटा. Okay Nandini. Okay बेटा. Okay बेटा. Good night everyone. Bye. Good night all.
ओके बेटा, बाय नन्ही.